second chapter in biology. So today we are going to learn what tissues are. Tissues. Earlier we have already studied what cells are. Now cell is the smallest and the basic structural unit of our body. So cells, when we move on with cells, group of cells, let's say these 4 cells, it is a group of cells. It performs one function. It performs one function, that is, let's say excretion or digestion or any other function. Let's say these 4 perform a specific function. One specific function they perform. Because they perform a specific function, this group of cells which perform a specific function is called a tissue. So what we learn what is a tissue is a group of cells performing a specific function, which could be anything. They constitute a tissue. Now, when we learn more about tissues, we get to learn about plant tissues and animal tissues. As you can see, I've copied these images for you all. Now, we have 2 types of tissues, plant and another one is animal tissues. In your NCERT, when you look on, you will find proper points of difference between these said points. As you can see here, I will move this picture a little bit downward so that you all can understand it more nicely, and I can write the point of difference between plant and animal tissues here itself. So when you talk about the plant tissue, so first point of difference that can be mentioned in your NCERT is unlimited growth. They grow throughout their life, whereas these don't grow throughout our lives. In animals like humans are animals itself, so our tissues are not going to grow throughout our life, whereas in plants, all tissues are going to grow unlimitedly and sometimes they acquire permanent function, shape and everything, and they stop growth, but they still continue to grow in girth or any other aspect or proportion of their body. They keep on growing in some way or the other. Then we have another point of difference, which is the dividing tissues. The dividing tissues are restricted to specific locations. Restricted to specific locations. For example, when we see any type of a plant tissue like meristematic tissue that we are going to study further, let's say this is my root tip. This is my root and this is my root tip. Now, sometimes my divisibility of cells and divisibility of tissues is only limited to this much area of my root. This area won't grow, this won't grow, neither this. Only this area is going to grow, and this divisibility is restricted to the tip of root. Whereas in animals, हमारे जो tissues रहेंगे, they can grow from anywhere and there is like
नो रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ नहीं होगी हमारी बॉडी में कभी भी. You will see if right hand is growing, left hand will also grow. So this is not restricted growth. This is a free growth. This is a restricted growth that only tip of my root is going to grow, whereas this part is not going to. In this, it's not as if this is my fingers and this is my hand, so my fingers are going to grow and my hand is not going to grow. It's not the case in animals. If your fingers are going to grow, your hand is going to grow as well. So this is the difference, one point of difference. Then these are dead. Some are living, but mostly these are dead. They provide support because to withstand the environment conditions, withstand करने के लिए these are dead and supported, whereas all animal tissues all are living. They have to be living. Alright, there. So you can note down these difference, plant and animal tissues. This is my difference table, and you can directly write this is a 3-mark question. In your exam, a teacher may ask you this question, and simply you are just going to write these 3 points. I'll make you understand this diagram of different type of tissues that are epithelial, connective, nervous, muscular, and in this parenchyma, collenchyma, these are permanent tissues. We will learn all about this, but this is just a point of difference to make you understand that हमारे दो चीज में डिफरेंस रहेंगे. देखिए, पहला डिफरेंस हमने बहुत क्लियरली हमको जान लेना है कि कौन से डिफरेंस किस चीज के लिए हमारे यूज हो रहे हैं. ठीक है, अब हमारे पास एक एक्टिविटी है हमारे उसमें. मैं दूसरे कलर से आपको डिनोट करूंगी वो एक्टिविटी को. दिस इज माय एक्टिविटी 1, NCERT. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक as far as your studies are concerned. NCERT आपकी सबसे important book रहती है. So NCERT में there is a diagram which shows you growth of 2 onions. Onions are kept in a jar filled with water, and this water jar onion growth is shown. When you keep your onions in water jar, the tip of the onion, the root tip of the onion starts growing. What does this indicate is the tip grows, the tip grows. This is what you learn. And what is said, पहले दोनों jar 1, jar 2 दोनों की टिप ग्रो करी, दोनों की टिप ग्रो करी, बट उन्होंने क्या किया, jar 1 में इसको रहने दिया, whereas in jar 2 they cut this terminal root को उन्होंने क्या कर दिया, कट कर दिया. मैं यहाँ से इसको अगर कट कर दूंगी तो अब जो अनियन मेरे पास बचेगा वो अनियन ग्रो नहीं करेगा, जबकि जार 1 वाला अनियन की जो रूट्स हैं will keep on growing. As and when they will keep on growing. So this is what this will show me, that only some regions show growth. तो जहाँ पे हमारे पास टिश्यूज वाले प्रेजेंट होंगे ग्रोथ वाले, प्लांट में सिर्फ वहीं ग्रोथ होगी. ये एक्टिविटी हमको डेमोन्स्ट्रेट करवाती है. अब वो टिश्यूज हैं कौन से, तो इसका जो सीधा सीधा कंक्लूजन है वो ये है. क्या है कंक्लूजन? दैट, आप सीधी मेरी बात सुनिए ध्यान से. दिस एक्टिविटी सिंपली सजेस्ट दैट टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन दिस region, that is the meristematic tissue present, meristematic tissue present in this region is responsible for the growth of my onion, and as and when I cut this meristematic tissue zone, the growth will be restricted.
The growth will not happen because the growth happens only at the meristematic regions. ना अब हम जब मेरिस्टेमेटिक में यहाँ पे आपको बताती हूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, दीज आर द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। अभी हमने पढ़ा कि ये क्या है, हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रोथ इन प्लांट्स, ऑब्वियसली प्लांट्स की ग्रोथ में ये टिश्यूज है रिस्पॉन्सिबल है। नाउ अब इसके कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है, वो क्या करता है, मैं एक ड्रॉ करती हूँ आपके लिए एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सपोज करिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, as it is a tissue, so we will not only draw one cell, rather we will draw a group of cell because tissues are a group of cell. ये मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा लेट से बनाया है, ठीक है। अब मैंने ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाया है, तो इसमें फीचर्स देखिए आप, बहुत अच्छे फीचर्स मैं आपको लिखवाऊंगी, वो आपको पेपर में लिखना है, और दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम योर एनसीईआरटी। नो अदर पॉइंट्स यू हैव टू क्रिएट फॉर योर ओन। Alright, so simple points we have to understand. So first feature of this meristematic tissue is it is cell wall is thin. Cell wall is thin first, and we have a prominent nucleus found in its cytoplasm. प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखेगा आपको, कुछ कुछ टिश्यू होते हैं जिसमें पेरिफेरी न्यूक्लियस हो जाता है, छोटा सा हो जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आपको बीच में दिखेंगे इन सेल्स के। तो एक पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हमारे पास इधर आ गया, ठीक है। अब इधर इंटरसेल्युलर स्पेसेस बोल रहा है वो, नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस का क्या मतलब है, सीधा सीधा ये देखिए, ये दूसरा कलर में चेंज कर लूंगी इससे आपको क्लियर। ये सेल 1 है, ये सेल 2 है। अब सेल 1 और सेल 2 के बीच में आपको क्या कोई स्पेस दिख रहा है, तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं है इसमें, इससे हमें ये पता चलता है। अब इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं है इसलिए इसकी ग्रोथ भी अच्छी रहती है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसमें वैक्यूल, जो हमने पढ़े थे ऑर्गेनेल्स, वैक्यूल नहीं होता है। याद है आपको, एक वैक्यूल होता था ऐसा जो हमारा सारा वेस्ट और ये सब स्टोर करता था। इसमें वैक्यूल नहीं है। अब क्यों नहीं है, ताकि वो ग्रोथ में इंटरफेयर ना करे। इंटरफेयर कैसे करेगा ग्रोथ में, जब हमको डिवाइड करना है, जैसे मेरा ये सेल है, इसको डिवाइड करना है 4 सेल में, एक सेल को 4 सेल में डिवाइड करना है, 3 सेल में डिवाइड करना है, तो जब इसमें अगर वैक्यूल आ जाएगा तो फिर उसको वैक्यूल को भी डिवाइड करने में टाइम लगेगा। तो फास्ट करने के लिए हमारे प्रोसेस को वैक्यूल एब्सेंट रहता है हमारे इसमें, क्योंकि जो वैक्यूल में हमारा जो कुछ भी सामान होगा, छोटी से छोटी चीजें, वो क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स की ग्रोथ में, ठीक है। अब एक इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये होते हैं अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब, डिफरेंशिएट हो जाने का मतलब क्या है, हमने पहले पढ़ा था सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन क्या है, अपना काम ले लेना। तो ये अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब इन्होंने अभी तक अपना रोल जो है अक्वायर करा ही नहीं है, इन्होंने अपना रोल एक्वायर नहीं किया है, इसलिए ये लोग क्या है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। ये डिफरेंशिएट कब हो जाएंगे, जब ये परमानेंट हो जाएंगे और अपना एक रोल ले लेंगे, पर अभी ये क्या है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट में आ जाएगी, these are living tissues।
only living tissues in plants. ठीक, तो अब हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हमारे पास क्या है, हमने एक पढ़ा टिप ऑफ रूट में हमारे पास एक था, वो ग्रोथ करा रहा था। फिर हमारे पास एक एपिकल मेरिस्टेम भी होता है। फिर हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या हो गया, जो एक नोड और दूसरे नोड के बीच में होगा, वो होगा लेटरल मेरिस्टेम। और सॉरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होगा वो ये होगा, ये आप देख रहे हैं लीफ जो हमारी अटैच कर रही है नोड पे, नोड्स पे जो अटैच कर रही है वो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो जाएगा। जो जैसे हमारा ये अगर बेस है और ये नोड है, यहाँ पे जो मेरिस्टेम है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, नीचे एपिकल मेरिस्टेम है। एक आता है राम, तो हम राम से कैसे कर सकते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम में क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट में जुड़ने वाला, एपिकल तो वो है ही क्योंकि वो एपेक्स में है हमारी, उसके एपेक्स में है हमारे उसके, इसलिए वो रूट एपिकल मेरिस्टेम। और ऊपर है तो सैम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होगा, हमारी शूट में होगा प्रेजेंट, और रूट एपिकल मेरिस्टेम हमारी रूट में होगा प्रेजेंट। लेटरल मेरिस्टेम है जो ये क्या करता है, गर्थ बढ़ाता है, इसीलिए उसकी मेरिस्टेम है, लिविंग है, उसको डिवाइड करना है, वो डिवाइड होगा तो वो डिवाइड करके वो क्या इस तरफ ग्रो करेगा, तो वो गर्थ बढ़ाएगा। सो दिस इज ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। आप ओवरव्यू देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस लेक्चर में बस हम यही देखेंगे कि क्या टिश्यूज थे, प्लांट और एनिमल टिश्यूज का डिफरेंस, ये सीधा सीधा बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके लिए। फिर हमने एक्टिविटी भी समझी, फिर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फंक्शंस और उनके स्पेशल फीचर्स भी देखे, जिससे वो मदद करेंगे हमको टू डिफरेंशिएट। ऑल्सो दे आर द टिश्यूज दैट डिवाइड विगरसली टू acquire differentiation and acquire a permanent role in plant body. So that's all for today.